प्यारे दोस्तों, गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती। इस शुभ अवसर पर हम एक भाषण सुने। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज 31 जुलाई प्रेमचंद जयंती। इस शुभ अवसर पर आपके सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी के जाने माने साहित्यकार है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट नाम से वे जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, इसलिए उनकी उच्च शिक्षा का प्रबंध उचित रूप से नहीं हुआ। एंट्रेंस पास करके एक स्कूल में अध्यापक हो गए। धीरे धीरे उन्होंने बीए परीक्षा पास कर ली। वे शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। पाठशालाओं के निरीक्षण के लिए उन्हें अधिक दौरा करना पड़ता था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। देश में राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। प्रेमचंद ने इससे प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। इसलिए उन्होंने कानपुर के एक विद्यालय में नौकरी कर ली। वे उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक हो गए। उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी और काशी जाकर मर्यादा नामक पत्रिका का संपादक बने। इससे उनकी ख्याति बढ़ गई। वे काशी के विद्यापीठ के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। कुछ दिनों के बाद वे नौकरी छोड़कर गांव चले गए। वहां से लखनऊ आ गए और माधुरी का संपादन करने लगे। प्रेमचंद बड़े देशभक्त थे। उन्होंने देशीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने माधुरी का संपादन छोड़कर अपना प्रेस खोला और हंस तथा जागरण का संपादन करने लगे। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानियाँ तथा निबंध लिखकर हिंदी साहित्य भंडार को संपन्न किया। उन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। सौज़े वतन उनकी पहली रचना है। वे नवाब राय नाम से लिखते थे। बाद में वे हिंदी में आए और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनकी कुछ रचनाएं देखें। उनके उपन्यास है कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन तथा गोदान। और उनके कहानी संग्रह नवनिधि, प्रेम तीर्थ, पंच प्रसून, सप्त सुमन, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, प्रेम पच्चीसी इत्यादि पुस्तकों में उनकी कहानियाँ संकलित हैं। मानसरोवर नामक पुस्तक 8 भागों में प्रकाशित हुई है। उनके नाटक हैं करबला, संग्राम, रूठी रानी तथा प्रेम की वेदी। कुछ विचार प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह है। प्रेमचंद के जीवन चित्र है दुर्गादास, कलम, तलवार और त्याग आदि। इस प्रकार कई पुस्तकें प्रेमचंद ने लिखी हैं। प्रेमचंद ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी किया है। उन्होंने कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया। इस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की पर्याप्त अभिवृद्धि की। उन्होंने समसामयिक समस्याओं के आधार पर उपन्यासों एवं कहानियों की रचना करके साधारण जनता के हृदय को आकृष्ट किया। उन्होंने अपने युग में कथा साहित्य की जीवन प्रणाली को जन्म दिया। प्रेमचंद गांधी जी के आदर्शों को मानते थे। सच्चे अर्थ में वे गांधी जी के अनुयायी थे। उत्तर भारत के गरीब ग्रामीण किसानों के जीवन का सच्चा चित्रण उनकी कहानियों में मिलता है। जमींदारों और महाजनों के शोषण से पीड़ित ग्रामीण जनता का उद्धार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना उनका लक्ष्य था और इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली। प्रेमचंद की रचनाओं में उर्दू का प्रभाव है। उन्होंने सरल एवं साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। सीधे साधे सरल शब्दों में सामाजिक कुरीतियों को उनकी रचनाओं में भली प्रकार दिखलाया गया है। उन्होंने स्थान स्थान पर मुहावरों की भी प्रयोग करके अपनी भाषा को और भी अधिक रोचक बना दिया है। इसमें वे अद्वितीय हैं। उनकी भाषा पूर्ण रूप से व्यावहारिक है।
विदेशी शब्दों का भी आवश्यकता अनुसार यथोचित स्थान उनकी रचनाओं में मिला। कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम पदावली का भी प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद की शैली में भाव गंभीरता, सरलता एवं सजीवता है। इसी से पाठकों को निराश नहीं होना पड़ता है। समाज के गहन से गहन विषयों तक सरल, सुस्पष्ट तथा मार्मिक शैली में विवेचन अन्यत्र नहीं मिलता है। उन्होंने हिंदी के विकास के लिए कठिन परिश्रम किया है। उसके लिए हिंदी साहित्य सदैव ही कृतज्ञ रहेगा। इसी के साथ मेरा यह छोटा सा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और സബ്സ്ക്രൈബ് करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ അത് ഉപകരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. മാത്രമല്ല, പ്രേംചന്ദ് ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രശ്നോത്തരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പ്രേംചന്ദ് ജയന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകളിലും പ്രേംചന്ദിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രേംചന്ദ് ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ കീഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിയോഗിതായം എന്ന വീഡിയോയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണുകയും അതനുസരിച്ച് അതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദിയിലെ അറിവുകൾ മികവുറ്റതാക്കാനുമൊക്കെ ഉള്ള അവസരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗുൽദസ്ത ഹിന്ദി ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സബ്കോ ധന്യവാദ്.